हे गाइस, हमारे पीछे महादेव है। सारे जोर से बोलेंगे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम अपने वियतनाम के डेस्टिनेशन को कंप्लीट करते हैं। सो हमने एक बेसिक इमेजिनेशन टॉपिक कवर किया था वियतनाम में, स्पेशली हनोई सिटी के बारे में। डेट हनोई सिटी में मेजर क्या क्या, देखो कोई भी डेस्टिनेशन जब आप समझ रहे हो ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 5 एज को समझो। किसी भी डेस्टिनेशन की आइटनरी को जब आप प्लान कर रहे हो, उसको आप 5 एज में पहले तो आप डिवाइड कर लो। 5 एज में 5 एज कौन कौन से हैं आप नोट डाउन कर लेना, या तो आप मेमोराइज कर लो। सबसे पहले आती है एक्सेसिबिलिटी, आई एम सॉरी, सबसे पहले आती है अट्रैक्शन। तो आपके पास एक फिक्स्ड अट्रैक्शन होना चाहिए जो आपको विजिट करना है। उस अट्रैक्शन को विजिट करने के लिए एक पर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पर्पस ऐसा स्पेसिफिक नहीं है तो उसे हम बोलेंगे लेज़र पर्पस के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो। एक बार आपने अट्रैक्शन जब फिक्स कर दिया तो द सेकेंड पॉइंटर इज़, एक सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। तो एक बार ये अट्रैक्शन आपने फिक्स कर दिया तो द सेकेंड पॉइंटर इज़ एक्सेसिबिलिटी। आप उस अट्रैक्शन तक पहुंचोगे कैसे। सपोजिटली हमने अट्रैक्शन सेट किया हनोई सिटी, तो हनोई सिटी पहुंचने के लिए हमारे पास एक्सेसिबिलिटी क्या क्या है। तो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर हो गई, ये सारे सिटी से हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ़्लाइट है हनोई सिटी के लिए। अब जैसे हम हनोई सिटी पहुंच गए, आफ्टर द अराइवल एक एक्सेसिबिलिटी में एक और फ्लाइट के साथ जो दूसरी एक चीज़ आ जाती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वीज़ा। लाइक जैसे वियतनाम में इट रिक्वायर्स प्री अप्रूव्ड वीज़ा, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा रिक्वायर्ड होती है। डैट मीन्स कि वहाँ पे अराइवल के पहले आपके पास वीज़ा डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आपको इमिग्रेशन पे दिखाना है। तो वंस यू अराइव एट हनोई, दैट इज़ नोई बोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे आपको अपने प्री अप्रूव्ड वीज़ा, ई वीज़ा शो करनी है जिससे आपको सिटी में एक्सेस मिल जाएगी। तो वंस द अट्रैक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी पार्ट इज डन, इसके बाद हम देखेंगे अकोमोडेशन। उसके बाद एक ट्रांसपोर्टेशन लेकर, डेट इज अगेन अंडर द एक्सेसिबिलिटी पार्ट इन सिटी और इन कंट्री। एक होती है कि इंटर कंट्री ट्रांसपोर्टेशन, एक होती है कि कंट्री के अंदर वाली ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन लेकर हम होटल पे रीच करेंगे। तो होटल डेट इज़ द पार्ट ऑफ अकोमोडेशन। सबसे पहले हमने अट्रैक्शन देखा, सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी, थर्ड इज अकोमोडेशन, फोर्थ इज एक्टिविटीज़। जैसे हमने अकोमोडेशन, जैसे हमने होटल में चेक इन कर लिया, उसके बाद व्हाट आर द अट्रैक्शंस वी आर कवरिंग, और अट्रैक्शन कवरिंग के साथ साथ कौन कौन से एक्टिविटीज़ वी आर इंडल्जिंग एट। तो हनोई में कौन कौन सी एक्टिविटी में हम इंडल्ज कर रहे हैं, इसमें हनोई में डे 1 पे हम करेंगे हनोई सिटी टूर। हनोई सिटी टूर में हमने देखा वी विल बी कवरिंग होची मिन कॉम्प्लेक्स। होची मिन कॉम्प्लेक्स में होची मिन की म्यूजियम, होची मिन द फेमस पर्सनैलिटी हु इज़ ऑल्सो नोन एज अंकल हो ऑफ द नेशन, जस्ट लाइक महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन, होची मिन द पर्सनैलिटी इज नोन एज अंकल ऑफ द नेशन। तो होची मिन कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल विल कवर होची मिन कॉम्प्लेक्स में विल कवर होची मिन म्यूजियम। होची मिन म्यूजियम के बाद विल गो टू होची मिन्स हाउस ऑन स्टिल्थ। हमने बात किया था स्टिल्थ इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे ड्यू टू हाई फ्लड उन्होंने क्या किया, दे बिल्ट अ वुडन पिलर, और पिलर के ऊपर में दे बिल्ट अ हाउस सो डैट वाटर डोंट कम टू देयर फ्लोर। तो दैट कॉन्सेप्ट वी कॉल्ड एज हाउस ऑन स्टिल्थ। तो होची मिन यूज्ड टू लिव इन अ हाउस ऑन स्टिल्थ, सो वी कॉल इट टुडे एज होची मिन्स हाउस ऑन स्टिल्थ। होची मिन्स हाउस ऑन स्टिल्थ के बाद वील कवर वन पिलर pagoda. One pillar pagoda is like a temporary, not temporary but a similar word of temple. We can say just like a temple behind me, we can also call it as a Shiv's pagoda in Buddhism. So just like one pillar pagoda, a temple which is standing on one pillar. So one pillar Buddhism temple or a pagoda. After that we'll cover temple of literature, एंशियंट यूनिवर्सिटी वी कैन कॉल इट, जस्ट लाइक नालंदा एंड तक्षशिला। सो उसके बाद विल कवर बादिन स्क्वायर। बादिन स्क्वायर इज़ अ प्लेस जहाँ पे जस्ट लाइक द पार्लियामेंट हाउस एंड इंडिया गेट एरिया वेयर द परेड टेक्स प्लेस एंड वेयर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर टेकिंग प्लेस। उसके बाद विल आफ्टर कवरिंग द होची मिन कॉम्प्लेक्स विल गो टू द लेक, लाइक the lake which is located at the heart of the city.
So after covering the lake part, we'll cover the old quarter. Old quarter is very famous for food and nightlife, along with some shopping and leisure activities. So we'll go for the cyclo ride. We discussed what is cyclo ride. Will have lot of options in terms of shopping at old quarter. On day two, we have a second attraction called as Ninbin City. Again, it comes under a attraction. Ninbin City के लिए we in the morning after the breakfast we leave from the hotel. We'll go to Ninbin City. We'll cover Howlu. We'll cover Tamkok. We'll cover boat ride. We'll cover three major attractions at Ninbin, and again we'll also cover Mua Cave. In case you are comfortable climbing 500 stairs, then Mua Cave is a place to go for you. You can click some amazing pictures standing above the Mua Cave. Once the Mua Cave is done, we'll sum up the Ninbin tour and we'll come back to our hotel at Hanoi. On day 3, what we can do in the morning after our breakfast at the hotel at around 8 to 8:30 a.m., we can leave for the Halong Bay cruise. Halong Bay cruise, it takes around 2.5 to 3 hours from Hanoi city to reach Halong Bay cruise. So after our breakfast, either we can check out from the hotel and take our luggage and go directly for the 1 night 2 day of cruise, or what we can do, we can keep our luggage at the hotel. Rather than checking out from the hotel, we can go for the full day excursion of the cruise, and we can have our overnight stay at Hanoi city, at the Hanoi city hotel at Old Quarter. So whatever, if in case we are going for a day tour of Halong Bay cruise, we'll be covering some of the attraction like T-Top Island is the main island that we cover. Like we go to the under cave pedal boat, the kayaking activity, which is very famous. We also get in indulge with like lot of other water activities like snorkeling, boarding, surfing, kayaking, and lot of other soft adventure and hard adventure water activities. You can even indulge in scuba diving and other activities at your own cost. So in case you are having your overnight stay at Halong Bay cruise, you will not check out, you will not disembark from the cruise in the evening time after your lunch, after the sunset. Instead, you will just go to your ocean view cabin room and you can just have your overnight stay at the cruise. So with the overnight stay, there are some additional benefits, like there are a lot of indoor activities, games, and a lot of other entertainment, fun and entertainment activity zones inside the cruise that you can indulge in, and you can just spend your amazing time on the cruise, on board the cruise. Next, in the morning after your breakfast, after the beautiful sunrise followed by a beautiful breakfast, a delicious breakfast, after the brunch we'll disembark from the cruise and we'll move towards Hanoi city. So in case if our tour is having 1 night 2 day of Halong Bay cruise, on day 4 we'll check out from Halong Bay cruise and we'll come to Hanoi city back. So from Hanoi city, these are the major attractions and the activities that we cover. And talking about the amenities, like all public toilet, all the malls, and lot of shopping places, lot of street facilities, all these things are easily available in Vietnam. Vietnam is one of the major growing economic country in the Southeast Asia, connecting Cambodia towards west, and it has a very north to south very longer route of sea. So it has lot of sea trade, like China is obviously capturing it and just doing its own whatever it wants to, but somewhere Vietnam is also, yes, following the US rule and capitalizing its asset. So that was mostly about Hanoi city. After the Hanoi city, the second city comes at Da Nang. So Da Nang falls between the central part of Vietnam. So Da Nang, the breadth of the Da Nang as a city is very less, like around 35 to 40 kilometers. If we move towards west of Da Nang, 20 to 25 kilometers, 30 kilometers, we go towards the border of the Cambodia. Like the area is hilly area, a physical geographical hilly area that is dividing two countries. Usually there is a physical geographical feature, a border which is working as a border, or a point which is dividing two culture, because there needs to be a hard political border, hard geographical
futuristic borders. So Bana Hills acts as one of the tourist attractions. French were very interested into these hilly destinations. They were much more into having vacations. So the officials, they came up with like a plan of building up beautiful homes and vacation homes and architectural beauties as Bana Hills. So they again later Vietnamese came up with a plan of building a cable car ride. So what we can do at once we are at Da Nang, so we can go for the Bana Hills tour. How Bana Hills tour operates is in the morning after our breakfast we leave the hotel somewhere at around 7:30 to 8 o'clock in the morning. After the breakfast we go towards the boarding point of the cable car. So from there we take around 60 minutes of cable car ride, reaching to the Golden Hand Bridge and the Bana Hills Bridge. We cover the Golden Hand Bridge, the bridge that is most picturesque and the most Instagrammable when it comes to Vietnam as a destination. Post covering the Golden Hand Bridge, we'll move towards the French Village. After covering the French Village, having our lunch at the French Village, we can cover the Sun World theme park. After covering the Sun World theme or the amusement park, we'll again come to the cable car station and we'll take a cable car ride back to Da Nang. So this is how the Bana Hills tour operates. Apart from Bana Hills tour, we can explore some of the Da Nang attractions like the Dragon Bridge, the fire show with the Dragon Bridge. We can go to the Hoi An ancient town. Hoi An ancient town with the lantern show is like a must go activity. Apart from Hoi An city with lantern show, we can go for the coconut forest with basket boat ride. The basket boat ride is such a thrilling and must visit activity. So coconut forest with basket boat ride, combining it with Hoi An, like from afternoon to evening on day 3 of our Da Nang itinerary, from afternoon to evening, or else on day 4 if we are arriving at the Da Nang in the first half of the day, from afternoon to evening we can go for the tour that is combining coconut forest with basket boat ride, followed by the Hoi An ancient town tour with lantern show and boat ride. And this tour also includes your dinner. So after covering all the attraction after your tour, you will have your dinner and then you will come back to the Da Nang hotel. Apart from that, these are the two major activities or the tours that are operated from Da Nang. Apart from that, there are two more cities that we need to discuss, and those are Ho Chi Minh and Phu Quoc. That will continue. As of now, I think the video is going a bit longer because the words per minute are very high, so we need to just stop it and we need to just revive whatever we have discussed. So Jai Shri Ram, Har Har Mahadev.